क्या है, एक्सटर्नल डायामीटर है, एरिया इज 166.67 is equal to pi by 4 into 250 square minus d square. So 21220.65 is equal to 62500 minus d square. So how d square is equal to 41279.35. So d is equal to 203.17 mm. ठीक है. सो हमें इंटरनल डायमीटर मिल जाएगा कॉलम का. नाउ next example is a rectangular bar of uniform width 15 mm throughout is subject to axial pull P is shown in figure. If the maximum tensile stress in the bar is not exceeded 100 megapascal, determine the safe axial pull. So figure is given. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर बार इज गिवन. तो फर्स्ट बार विथ क्या है 15 mm. थ्रू आउट इट्स सब्जेक्ट थ्रू आउट जो उसकी विथ है वो 15 mm. एक्सेल पुल P इज शोन इन फिगर. ठीक है, पुल लिया गया है P. द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन द बार इज नॉट एक्सीडेड टू 100 मेगापास्कल. टेंसाइल स्ट्रेस क्या है बार के अंदर, इट इज़ 100 megapascal. Determine the safe axial pull. So first of all find out करेंगे maximum stress sigma is equal to 100 Newton per mm square. The stress will be maximum at a section where cross section area is minimum. So cross sectional area at the section 1 So A1 is equal to 100 minus 60 multiplied by 15. So it is 600 mm square. Now second, क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द सेक्शन 2 सेकेंड पार्ट के लिए हम एरिया फाइंड आउट करेंगे. सो इट इज़ 80 इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाई 15. सो 1200 mm स्क्वायर. नाउ लिस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज इक्वल टू 600 mm स्क्वायर. सो सेफ लोड स्ट्रेस इज गिवन, एरिया वी हैव. सो पी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए. So 100 multiplied by 600, so it is 60,000 Newton. So it is 60 kilo Newton. So in this way we can find load on the rectangular bar. Now next is principle of superposition. Most important theory, principle of superposition. So when a body is subject to a number of forces acting on its outer edges as well as some other section along the length of the body, total deformation of the body will be equal to the algebraic sum of the deformation of the individual section. This is true within elastic limit only. The principle is called principle of superposition. तो क्या है कि कोई भी हमें बॉडी दी गई है subject to number of forces acting on outer edges. There are number of cross section of body is given and number of forces acting on its outer edges. At that time the total deformation of the body के अंदर फोर्स की वजह से जो डिफॉर्मेशन आएगा इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन. एल्जेब्रिक सम ऑफ जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेक्शन के अंदर जो डिफॉर्मेशन आएगा उसके समेशन के इक्वल रहेगा. सो दिस इज़ द ट्रू विद इन इलास्टिक लिमिट. ये कहाँ तक पॉसिबल है, इट इज़ इन इलास्टिक लिमिट ओनली. दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सो इट इज़ फाइंड आउट बाय डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा L1 प्लस और माइनस डेल्टा L2 प्लस और माइनस डेल्टा L3 अप टू डेल्टा Ln. If force is tensile, use positive sign, and if force is compressive, use negative sign. Now we know that delta L is equal to PL upon AE. ये कैसे आया? We know that sigma is equal to P by A, epsilon is equal to delta L upon L, and Young modulus is equal to stress upon strain. So E is equal to stress upon strain, P by A upon delta L upon L. So delta L is equal to PL upon AE. PL upon AE.
So delta L is equal to P1 L1 upon A1 E1 plus or minus P2 L2 upon A2 E2 up to Pn Ln upon An upon E2. ठीक है. So here figure is given. First three member is given, A1 A2 and A3. ठीक है. Length is L1 L2 L3. Three section is given, first second and third. First is AB, second B and C, थर्ड C and D. ठीक है. AB पे एक्सेल पुल हो रहा है, टेंशन फोर्स. बी सी पे कंप्रेशन फोर्स, CD पे टेंसाइल फोर्स. So where P1 P2 P3 are forces on different section, L1 L2 L3 are length of different section, A1 A2 A3 are area of different section, E1 E2 E3 is equal to E is the modulus of elasticity of the bar material. So by using principle of superposition we can find deflection of the total body अथवा तो cross sectional of the body. So what is the definition? When body is subject to number of forces acting on its outer edges as well as at some other section along the length of the body, total deformation of the body will be equal to the algebraic sum of the deformation of the individual section. This is true within elastic limit. So this principle is called the principle of superposition. So equation is delta L is equal to delta L1 plus or minus delta L1 plus or minus delta L2 plus or minus delta L3 up to plus or minus delta Ln.